everyone, I welcome you all on LegalEdge After College YouTube channel. So in today's video, we will be discussing why mocks are important for CLAT PG 2023 examination. Now, you all know that mocks are the one, right? जिनको practice करके अगर आप actual exam में जाते हो, तो there are very less number of chances कि आप actual examination hall में mistakes commit करोगे. इसी बात को हम step by step समझेंगे. All right. Uh, Good evening, Nazar. I hope you are doing well. Others are also doing well, and आपकी preparation काफी अच्छी चल रही है. All right. Now, so I hope you all are preparing for CLAT PG 2023 examination. That is the reason you came in this video and you watching it live. And इसका exam आपका होना है 18th of December को. All right. Now, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं बचा है आपके एग्जामिनेशन में, बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ही कम टाइम बचा है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू क्लैट पीजी, राइट, क्लैट पीजी का जो पेपर है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स रिक्वायर करता है स्टूडेंट से. ऑलराइट, हाय नसीफा, गुड इवनिंग. ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू सी कि मॉक्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्यों आपको मॉक्स देने चाहिए. आप किसी कहीं से भी मॉक्स परचेज करें या आपके पास कोई बुक हो उसमें से अगर आप मॉक्स अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए. ना फर्स्ट थिंग जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. गुड इवनिंग एवरीवन. सो द फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जो भी मॉक्स आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जो भी मॉक्स आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो मॉक्स आपकी एक्चुअल एग्जाम के पैटर्न पे होने चाहिए. ऑलराइट, सो डू नॉट थिंक दैट I'm preparing for judiciary. I have some guides with me. I have some books with me जिसमें multiple choice questions provided है. उनको मैं करके जाऊंगा and I'm going to ace CLAT PG examination. Believe me, it is not going to go in this way, because when you will see last 3 years paper of CLAT PG, you'll get to know that the pattern is changed. They always give you a paragraph, an excerpt, followed by questions, and most of the students make a mistake by by finding out the answers from the paragraph itself, and they end up losing their time. And when it comes to CLAT PG, as the total questions they are going to ask are 120 and you're going to get only 120 minutes, right? That makes 1 minute for one question. देयर आपको टाइम इज लाइक योर मार्क्स. ठीक है, तो वहां पे आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि कब आपको कितना क्या पढ़ना है. ऑलराइट, हाय, गुड इवनिंग. ऑलराइट, सो व्हेन इट कम्स टू मॉक अटेम्प्ट करने से आपको क्या क्या चीजें पता चलती हैं. ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं आपके क्लियर हो जाते हैं. फर्स्ट इज पैटर्न, राइट. सो आई होप जो भी क्लैट पीजी 2023 की तैयारी कर रहा है एंड उसमें अभी 30 डेज भी बाकी नहीं है, सो आई बिलीव कि आपको पैटर्न आपने डिकोड कर लिया है, राइट. अगर अभी भी आपको पैटर्न में प्रॉब्लम है, ठीक है, एंड आप अपियर करने वाले हैं, देन आई वुड रिकमेंड यू गो ऑन टॉप रैंकर्स वेबसाइट. वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कुछ पे किए आप तीनों साल के, दैट इज 2020, 2021 एंड 2022 का जो पेपर आया था, जो कंसोर्शियम ने क्लैट पीजी का पेपर लिया था, उसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो अटेम्प्ट करने से आपको क्लियर हो जाएगा पैटर्न. नाउ व्हेन आई से पैटर्न, तो यहाँ पे मॉक के रिस्पेक्ट में, मॉक्स के रिस्पेक्ट में जो भी मॉक्स आप अटेम्प्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि वो मॉक्स एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे बने हुए हों. ऑलराइट, सो देयर कम्स देयर वी कवर्ड द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज पैटर्न. ठीक है, तो बाय अटेम्प्टिंग मल्टीपल मॉक्स, राइट, आपको पैटर्न क्लियर हो जाता है. नसीफा इज सेइंग दैट मैम, इज इट नेसेसरी टू गिव मॉक्स ड्यूरिंग 2 to 4 PM? घर पे इस टाइम पे मेरा नहीं हो पा रहा है. ऑलराइट, आई विल टेक योर पॉइंट लेटर. ठीक है, आई विल टॉक ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. नसीफा, लेट मी कंप्लीट दिस. ठीक है, एंड रिमाइंड मी इफ अगर मैं भूल जाती हूँ तो, कि मेरे को इस पर्टिकुलर जो आपने कंसर्न रेज किया है इसको एड्रेस करना है. ऑलराइट, नाउ फर्स्ट इज pattern, second is practice. Now you all have been hearing this, that practice makes a man perfect, and that's so true, right?
And especially when it comes to CLAT PG examination, unlike any other examination जहां पे आप रट के जाओ और हो सकता है कि आप मार्क कर लो, यहाँ पे they always try to check your analytical skill, your awareness about law, because now you're a law graduate, you're a lawyer in yourself, right? So they try to check your analytical skills, right? So they're not going to ask you direct questions. They're always going to ask you little bit complicated, indirect questions. There you have to apply your mind. Now, how will you apply your mind in actual exam accurately is based on how much practice you have done. अब practice जो point है, it is again related with pattern. Why? Because आपको जो practice करनी है वो हमेशा correct pattern पे करनी है, right? So there are multiple students to whom I have taught for 2022 CLAT PG examination. Later they came out to us and they mentioned that कि मैम हमने जो practice की थी वो जुडिशरी की किताबों से की थी, एंड जब क्लैट पीजी का एक्चुअल पेपर आया, ठीक है, तो हम कंफ्यूज हो गए, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाए. सो इन ऑर्डर टू इरेडिकेट ऑल दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ना हो एग्जामिनेशन में, आई एम सजेस्टिंग कि आपको जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए. एंड वो प्रैक्टिस एक्चुअली जो क्लैट पीजी का सिलेबस है, जो पैटर्न है, उस पे बेस्ड होनी चाहिए. ऑलराइट, how much practice is needed? See, there's no quantifiable data to that कि कितनी practice needed है, but I believe now the time is that every single day you have to attempt at least one mock. All right, so every single day make sure to attempt one full-fledged mock. All right, that's more than sufficient. Now, next point here is time management. Now, when it comes to time management, here as I mentioned that आपका जो पेपर है वो 120 minutes का होगा and you have to solve 120 questions. Now understand one fact that जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में आपको 1 मिनट ही लगे, राइट? हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आप 10 seconds या 5 seconds में mark कर लो because you are very firm. And remember one thing, here you have to manage your negative marking as well, which is 0.25 for one incorrect answer. So you have to maintain this thing that कि आप एक क्वेश्चन में, जो क्वेश्चंस में आप एकदम फर्म है, वहां पे आपने पॉइंट लाइक 5 सेकेंड लगाया, 10 सेकेंड लगाया, एंड फ्रॉम हियर यू आर गोइंग टू सेव योर टाइम एंड विल इन्वेस्ट समवेयर जहां पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज है, एंड थोड़ा सा टाइम अगर आप वहां पे देंगे तो यू विल बी एबल टू रीच टू द करेक्ट आंसर और इन रीडिंग दी एक्सर्प्ट्स. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू मैनेज. एंड ये कहाँ से आएगा? ये आएगा प्रैक्टिस करने पे, और वो वाले मॉक्स प्रैक्टिस करने पे जहां पे आपको जो पैटर्न दिया हुआ है, राइट, वो एग्जैक्टली क्लैट पीजी का है. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज, सो टाइम मैनेजमेंट वी हैव डिस्कस्ड. यहाँ पे हम नसीफा का क्वेश्चन भी उठा लेते हैं बिकॉज इट इज ऑल्सो समवेयर रिलेटेड टू टाइम. सो शी इज आस्किंग कि मैम जो एक्चुअली एग्जाम का टाइमिंग है, ठीक है, वो ब्रैकेट में क्या मुझे हर रोज मॉक सॉल्व करना चाहिए? सो आपने ये बहुत लोगों से कहते हुए सुना होगा अभी तक कि जो भी आपका एक एक्चुअल एग्जाम का टाइमिंग होता है, इन ऑर्डर टू कीप योरसेल्फ अलर्ट इन दैट ब्रैकेट, इट्स रिक्वायर्ड, इट इज सजेस्टेड कि आप पहले से उसी टाइम पीरियड पे मॉक्स देते आए. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका एग्जाम 10 to 12 होने वाला है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो हर एक दिन 1 महीने पहले से 10 से 12 बजे के बीच में इट इज सजेस्टेड कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करें. बाय बिकॉज योर माइंड, you're training your mind to do a particular task at that particular time, right? And that matters a lot. However, there are people जो टाइम आपका एग्जाम का है उसमें बिजी है या कॉलेज में होते हैं या उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, इन दैट केस आई वुड सजेस्ट देम कि आप उस ब्रैकेट के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद, राइट, का टाइम चूज करें, बट डू नॉट मेक इट इन अ मैनर कि आपका एग्जाम जो है वो दिन में होने वाला है, आप रोज मॉक करते हो रात को 2 बजे से लेके 4 बजे तक. इन दैट केस आप यूज टू हो जाओगे उस वक्त को में अलर्ट रहने के, एंड जो एक्चुअल एग्जाम टाइमिंग है, हो सकता है कि वहां पे
आप उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाओ. नाउ दिस इज अ वेरी स्मॉल टिप, राइट, बट बिलीव मी इट वर्क. ठीक है, इट वर्क्स फॉर एंड इट वर्कड फॉर इन all the competitive examination, and CLAT PG is no other. All right, now repetition, sometimes it happens, and when I say sometime, right, so 40% times, 40% अगर हम percentage में देखें या 30% of time, it happens that whatever mocks you're solving, आपके आपका जो actual exam आता है वो उन्हीं mocks के on and around आता है. All right, for example, you're solving a question based on an excerpt. That excerpt is based on a judgment. Now this judgment is from the recent month of, let's say, October, right, and उसी जजमेंट से कोई डिफरेंट एक्सर्ट पूछा गया है आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन में. नाउ क्योंकि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, तो पॉसिबिलिटी है आउट ऑफ दो 6 क्वेश्चंस यू आर गेटिंग 3 क्वेश्चंस जो आपने मॉक में सॉल्व किए हैं. नाउ व्हाट विल हैपन देयर? Point number one, you're going to save a lot of your time, right? पॉइंट नंबर सेकंड, एक्यूरेसी आएगी, आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. दैट इज द रीजन आई ऑलवेज इंसिस्ट. आपने कोई कोर्स नहीं लिया है, आपने कोई क्लासेस नहीं लिए हैं, इट्स ओके, बट डू नॉट स्किप द मॉक थिंग्स. ऑलवेज गो फॉर द मॉक एंड कॉन्स्टेंटली आई एम रिसीविंग दिस क्वेश्चन कि मैम इज दिस द करेक्ट टाइम, इतने कम टाइम में जो बचा हुआ है उसमें मैम मॉक्स जितने भी आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, वो कवर कर पाऊंगा? माय आंसर इज यस, आप बिल्कुल कर पाओगे. यू हैव गुड नंबर ऑफ डेज इन योर हैंड, राइट? अगर आप 15 मॉक्स भी अटेम्प्ट करके जाते हो, इट इज गोइंग टू डू वंडर्स इन योर एग्जामिनेशन. ऑलराइट, सो रिमेंबर दिस थिंग. नाउ नेगेटिव मार्किंग. सो नेगेटिव मार्किंग का जो कॉन्सेप्ट है, वैसे तो आपको लगता होगा कि मैम सिर्फ 0.25 की तो नेगेटिव मार्किंग है, इतना लोड क्यों लेना है उसके लिए, राइट? इट इज नॉट सो. जब आप मॉक्स प्रैक्टिस करते हो, दैट टाइम यू रियलाइज कि बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग आप कितने सारे आपके मार्क्स जो आ सकते थे वो आप लूज कर रहे हो, एंड दिस इज अ हैबिट, राइट? सो आउट ऑफ दोज 120 क्वेश्चंस आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्या आपका रिक्वायर्ड स्कोर होना चाहिए, कौन सा स्कोर आपके लिए सेफ है, कितने परसेंट की रिस्क आपको लेनी है, these all things you get when you attempt the mock. The whole purpose of this session is to encourage you, to suggest you, to advise you as you are my student, right? Ki mocks inevitable part hai. This here I'm not selling any of top rankers or legal edge after college mock test series. Go for any mock you have, go for free mocks or whatever, but make sure that those mocks should be up to the marks. Make sure that those mocks should be on CLAT PG pattern. All right, I hope you like this video. If you like this video, kindly press the like button and share it with your friends. थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव जो आपकी कंपटीशन की भावना होती है ना, उसको थोड़ा सा साइड रख के शेयर करो. ठीक है, उनको भी पता चले कि मॉक्स कितने इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड आई होप if you like this video, you will press the like button. And one more thing which we are introducing now in our YouTube video, that is that we are giving you an open platform where you can ask any questions related to CLAT and ELET PG 2023 examination. The reason of this particular 5-minute session in every YT video is to answer all your queries, right, on this platform. But अगर आप अभी लाइव नहीं है, आपको बाद में कोई डाउट अराइज होता है, आप बाद में इस सेशन को देख रहे हैं, इन दैट केस यू कैन लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स. मेक श्योर क्वेश्चंस शुड बी क्लैट एंड एलिट पीजी बेस्ड. ठीक है, एंड क्योंकि एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा एग्जाम्स में, वी हैव इंट्रोड्यूस दिस थिंग. ऑलराइट, सो लाइक पढ़ाई करो वापस जाके. ठीक है, एंड आई होप इस सेशन ने आपको ये समझ आया होगा इस सेशन से कि मॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर ऑलरेडी यू हैव मॉक्स, आपको उनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना चाहिए. नहीं है तो यू हैव टू गो एंड सब्सक्राइब फॉर सर्टेन मॉक्स. ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. भूमिका इंदौरी साइनिंग ऑफ.